Hello and welcome to this exciting informative webinar brought to you by Allen Global, the leading study abroad preparation service provider. I am Purva, your host for today, and I am delighted to introduce you to our esteemed guest, Mr. Sujain Kumar. Mr. Sujain is a senior counselor at Allen Global, a premium study abroad platform, which has helped hundreds of students achieve their dream of studying abroad at the world's top universities such as MIT, Oxford, Imperial College London, and many more. We have produced some of the best results in the world in tests like SAT, IELTS, TOEFL, UCAT, and advanced placements, along with helping our students get in top institutions in reputed organizations across the globe. Allen Global is present in various locations across India, such as Kota, Mumbai, Bangalore, Pune, Mohali, Surat, Ahmedabad, Indore, Bhubaneswar, and Jaipur. By the end of the session, you will have a clearer idea of what it takes to get into top German universities, what are the entry requirements, and how to build a robust profile that impresses the admission officers. We have much more to cover today, so without any further ado, let me hand over the webinar to Mr. Sujain, sir. Over to you, sir. Thank you. So I appreciate the introduction. It's a great to be speaking with all of you today. So today's agenda is to talk about Germany, emerging a place for the international aspirants. I'll be sharing the some slides where we can talk about so much about German education, about why Germany is now being the popular destination for among international students. So without wasting more time, I just want to like show my slides so that we can interact at the later stage when we are done with the webinar, and at the later stage we'll talk about the questions also which you guys will have. So without wasting time, I'm starting with my first slide. Okay, so why study in Germany? Why not in any other location? So very good question that is asked by the many of the aspirants. We have been getting inquiries about this from many students either at the undergrad stage or the at the postgrad stage. The query is now numerous. It has been coming with a lot of flows, and we are able to like answer to all of them. So very first question is tuition. Why it is getting popular? So it is the one of the major reason. It's because of the low and no cost education. Uh, so what does it mean? It means that you are, as an international students, many of them pays in lakhs, in crores for their higher studies. At the undergrad stage, the cost comes around of 2 crore, 2.5, not less than that. But as a international students, the pain for this you know is really costing an arm and leg for many parents. So this is one of the reason that is getting Germany is getting popular now among international students. Germany is the top three destination now uh, among international students. It's top three economy. It's top three in in the job prospects. The top three in the many more factors, many more in the departments. Uh, so talking about low and no cost education. So is it really true that it's a low cost or no education cost that you'll have to pay as international students? Right, you're correct. It has no cost. So they are public and private institutions. Most of them are public because international students generally gets attracted toward the public colleges. Uh, just not because of the ranking, just not because of the research opportunities, just not because of the affordable living style and all that. It has many reasons. If I'll give you the idea about like what is the top three, so I have given you the idea of the top three for many the things, right? The one of the top three is Nobel Prize winners, right? So it's again in the top three. First is US, second is UK, third is not other than Germany. So Germany is known for
the research. Germany is known for the land of ideas. With the low cost, with the no cost, if you're getting this kind of opportunity, it is, I guess, is not that of, the play that you're doing. It's a really, like good uh, play for you to start with, right? So where you're not paying any single charge and you're getting a really good degree, better than the Indian institutions, the top-notch institutions, better than the so many international institutions where ranking does matter a lot for international students. Uh, as I said, this is a significant draw uh, for students looking to, the pursue their higher education without accumulating any substantial debt, right? सब्सटैंशियल डेप्थ का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि आपको पैसा जो है वो लेते हैं तो यू टेक एज अ लोन यू लाइक आस्क योर guarantors are your parents, your siblings, your family members, right? So most of them are from your families, right? So many of them are parents. They take the money on certain charges, right, from any financial institutions, maybe from the bank, from any private body, and they comes in the debt, right, where the cost is approximately, I'm not telling you that it's free, right? It's free for certain students where you're saying that you're paying 2 crores, 2.5 crores, and we're saying that you're just paying the 500 bucks, 500 euros as a semester fee contribution, which is semester wise. But again, you are paying for, the other benefits like transportation, like, the library charges, registration, and all that. This is all included in this one, this cost. So the cost is around of 200 euro to 500, 600 euros as a social contribution, which makes it has a kind of no tuition fee, the states or country, right? So most of them are publicly funded, so you don't have to pay any other charges if you get in the private, in the public colleges. Those public colleges, you can see on the screen that these are highly ranked colleges, and these are QS World Ranking, because most of us believes the QS World Ranking, and we usually check the ranking on the QS and the other, these all ranking systems, where we find that of these universities ranking really good. Most of names are, like popular among, international students, and many of them know these all names, like Technical University Munich. It's in the main, the location of Munich, right? So that's the capital, right? So the Heidelberg University, Ludwig Maximilian, these are the top 50 colleges, top 100 colleges of QS, rated by the QS. All right. So it's not a bad, the attempt that you're gonna take. It's a good attempt which will help you to get in the right colleges where the ranking really play a very important role. QS ranking, for that, scholarships matter a lot in certain states in India, like in Rajasthan, in Hyderabad, in, in Kashmir, in even in the other states, right? So those have uh, the benefits for their, the for their states, right? So if you belong to any of these states and if you get in the QS, these all ranked colleges in the top 200, your other charges can also be get waived off, right, by the state governments and all. So we'll not talk about those things much, since this is about the Germany right now. So those are separate things, but we'll surely talk about those once we'll have that of one-to-one session with our, the aspirants. So scholarships for the international students, apart from that, is this is again a really good question, that things are, free, then why we need all the scholarship, right? So it's a good question. So again, I'll say the contribution that you're making here, the 500 to 1,000 euros per semester, and the living cost is something that is not included in the education, right? So we tell this as a tuition free country, right? But we don't say this as a tuition free. It's a free country for, for international students. You can't say this because you'll have to pay certain charges, which will be your living cost, which includes your accommodation, lodging, fooding, the other benefits like for entertainments, whatever the amount that you think that you pay, right? Uh, so वो अफोर्डेबल लिविंग की बात जब कही जाती है, तो यहाँ पे चौथा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, जो
अफोर्डेबल का मतलब ये है कि आपका कॉस्ट जो अदर कंट्रीज में है, यदि आप यूएस जाते हो तो 16 से 18 हजार आप यूएसडी में पे करते हो, विच इज रफली अराउंड ऑफ 80-85 एज पर द करंट रेट। जो आपका कॉस्ट एक अच्छे सिटी में, टीयर 1 सिटी में आपको पे करना पड़ता है रफली अराउंड 16 से 17 लाख रुपए आसपास। इफ यूर एक्स्ट्रा वेजेंट, लेट्स से आप बहुत ज्यादा पैसा खर्चीले हो और अच्छे से लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो फिर आपको उसमें और भी खर्च बढ़ जाते हैं। तो द कॉस्ट इज रफली अराउंड ऑफ 12 lakhs to 17-18 lakhs रुपीज, वेयर यूर सेविंग योर मनी एंड एज पर द करंट रेट इट्स इक्विवेलेंट, बराबर है। और इसमें आपको खर्चा जो है वो 10 हजार 12 हजार आसपास आता है, मोटा मोटी मैं बता दूं तो बहुत कम आता है यदि वो मंथ ऑन मंथ देखोगे तो। और इफ यू आर सेइंग कि मैं घर का खाना पसंद करता हूँ तो बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। ऑलराइट, सो अफोर्डेबल लिविंग इज अनदर पॉइंट दैट आई से कि आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। तो इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट, राइट? जर्मनी इज कंप्लीटली नोन फॉर द कॉस्ट। इतना कम लग रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जा रही हैं। आपने बहुत सारे नाम देखे होंगे जो अभी फिलहाल मूवीज भी बन रहे हैं, सभी मैक्सिमम जो थे वो रिसर्च या फिर जिन्होंने काम किया मैक्सिमम जर्मनी से कहीं ना कहीं से वो बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट्स नोन फॉर द रिसर्च, द एक्सटेंसिव फोकस इज ऑन रिसर्च, बट आई कांट से दैट कि रिसर्च के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ वाइब्रेंट कंट्री known for its many more other things. You'll When you'll search about Germany, you'll find about it's a land of music, right? It's a land of the opportunity. It's a land of research. It's a land of living affordable life. It's a land of many more things. uh, Top three is the factor for many things. I'll say that whenever you search about so many things, let's say the lifestyle कैसी है, uh, the आपके जो रिसर्चर हैं वो कितने रैंक पे आते हैं, तो इन सभी में सब कुछ आपको दिखेगा। तो टॉप थ्री दिखता जाएगा। इकोनॉमी इज इन टॉप 3, राइट? इट्स अ हार्ट ऑफ यूरोप एंड इट्स अ लोकेशन वेयर आपको यूरोप में देखोगे तो फर्स्ट रैंक में आएगा, बट यूरोप वर्ल्ड में देखोगे तो पहले रैंक पे जर्मनी स्टैंड करता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडलेस वर्क अपॉर्चुनिटी है, सो यू हैव दैट ऑफ अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम वर्क राइट्स जो आपको पढ़ने के टाइम पे मिलते हैं और पढ़ने के बाद मिलते हैं, दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। पढ़ने के टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको व्हेन व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर वर्किंग विद स्टडी, व्हेन यू आर वर्किंग and earning money for yourself. Let's say you don't get scholarships, let's say you don't get the public college, but what all the opportunities that you get, right? So उसके अलावा भी इतनी अपॉर्चुनिटी, when you get that public college and you're saying that you got the scholarship also, and at the same time you're making money as a part timer. It's a cherry on the ice cream, right? And a lot of things are coming in it's a win-win situation for international students. Triple win, I'll say, again, three. So you don't have to pay, you are going in the right university in the top rank, right? And you're getting and you're making money. So the burden on the shoulder becomes negligible on the parent side, right? So that is what the major point and the agenda of going to Germany. At the undergraduate stage, it's sometimes sounds like cumbersome, but again, we are here to support you. We have been sending students for so long, and again, I'll say that it will be difficult for many others, the counselor, but it is not difficult for us because we have that of seasoned counselor here. We have that of team who can assist you without any hassle. Even in the tough situation, we are here to support you. We are here to support you for submitting just not application. We are here to support on each stage of uh, your application process and in admission process. As I said, it has extensive focus on research, right? So it's a land of ideas, it's a land of research, it's a land of uh, the Nobel Prize winner, right? So research is available at all stages, and you will see these QS ranked colleges. These all are researched colleges. So I'm not saying that these are not offering, the terminal degree programs. These are offering terminal programs. These are offering research-based programs, and they have that opportunity for all students, all programs with no additional cost, with kind of no cost, right? So that is another wonderful point when you
see German universities as a the future destination. uh, अब बात करते हैं कि अब चीजें आप पढ़ने जा रहे हो तो सिर्फ इतनी से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई के अलावा ये भी है कि आप थोड़ा सा घूमना चाहोगे, एंटरटेनमेंट करना चाहोगे, लाइफस्टाइल थोड़ा इजी करना चाहोगे, एक्सपोजर लेना चाहोगे, मजे करना चाहोगे। तो ये सब चीजें कब हो सकती हैं? जब आपके पास एक पूरा फुल अथॉरिटी मिले। जैसे मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन आपने 500 यहाँ पे यूरोस का किया एज अ सेमेस्टर फी, इसमें आपने क्या पे किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको इस पे एक पास मिल जाएगा और आप ट्रैवल कर सकते हो एक सर्टेन लोकेशन पे जो डिफाइंड होते हैं कॉलेज के साइड से। तो अगेन द ट्रैवलिंग कॉस्ट बिकम्स जीरो फॉर यू, राइट, फॉर दोज स्पेसिफिक लोकेशंस, फॉर दोज स्पेसिफिक द पॉइंट्स, राइट, जहां पे आपको जाना है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में। So it's cost, it's the cost becomes negligible in, if you include such, the things together. uh you have a time, you have a travel, the opportunity to explore all European countries. uh and that just on the student visa. Why I'm telling this? Because on just of a student visa you'll have that opportunity to travel to, I'm not talking about the Senegal visa. I'm sure that you must not be heard of this. Many of our, I guess, the viewer may have that of, the chance of exploring, the European countries and about, the German and the European visa. So there is a different visa, or that we call it Senegal, but that is altogether a different visa. That is tourist for the tourism purpose. But on even on the student visa, आपको chance मिलता है कि आप आराम से जाकर किसी दूसरी कंट्री में इंटर्नशिप कर सकते हो। जॉब नहीं कर सकते, इंटर्नशिप कर सकते हैं टाइम पे जब आपको स्टडी टाइम है 3 साल का 4 साल का, इवन इन द वर्क राइट जो मिल रहे हैं उस समय भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यू हैव दैट टाइम टू एक्सप्लोर द लोकेशन, राइट, to go for the tourism purpose, right, without having of any additional, uh the the visa, I'll say, or the stamp on your passport, right? You have a right to explore other countries, and those are not one or two or three or four, 25 26 कंट्रीज हैं जो सेनेगल्स में इंक्लूड होती है, यूरोपियन कंट्रीज में इंक्लूड होता है। तो आई विल से दैट 25 24 कंट्रीज आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा सिर्फ स्टूडेंट वीजा पे। तो यू हैव दैट ऑफ ब्राइटर चांस देयर, यू कैन यूटिलाइज दिस benefit once again. So there is no benefit if you go to any other location other than, these European country. European country have that benefits, एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट को, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हो, बट आपको दूसरी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यदि आप यूएस जाते हो तो आपको ऐसा नहीं कि कनाडा घूमने का मौका मिल जाता है, या फिर 20 और नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज उसमें घूमने का मौका मिल जाता है, नहीं होता है ऐसा कुछ भी। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। This is about the growth of international students. The data is little old. It's till 2020, that is the time of the COVID, right? So the data is old, but yes, we are trying to get the current data, and it's above than this, the one that you can see. So 4,16,000 students has gone to the Germany in the last 4 5 years only, right? So it's becoming more because of the other reasons, like the one is they have started offering English taught programs, right? इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को और भी ऑप्शंस मिल जाता है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मन थोड़ा सा सीखते इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा सकते हैं। I'm not saying all programs are offered in Germany in English, right? So not all the programs are taught in English, but कुछ programs हैं जो limited हैं, approximate I'll say 400 programs आसपास जो है इंग्लिश टॉट हो गए हैं अंडर ग्रेड स्टेज पे। मास्टर स्टेज पे मैक्सिमम प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफर्ड होते हैं। Okay, so you can take a screenshot of it if you guys want. Then I can move into the next slide. Wonderful. So top courses. What are the top courses that the German universities offers to international students? As we all know that it's a land of the top automobile companies, right? आई एम श्योर आप सभी ने नाम तो जानते हैं कि वॉक्सवैगन क्या है, ऑडी क्या है, बीएमडब्ल्यू क्या है, एडिडास जैसी कंपनी है जो आप जानते होंगे कि शू इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, राइट? सो मेनी मोर कंपनीज, आई एम जस्ट टेकिंग द टॉप नो नॉच नेम्स, राइट?
Apart from that, the Simon is there, right? So many other companies are there. So we have, if I'll give you the idea, I have 100 companies name in my mind जो कि जर्मन बेस्ड है, एंड हम उनका नाम जानते हैं, बट हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं. हमें लगता है या तो वो यूएस की कंपनी होगी या तो फिर वो कहीं और की कंपनी होगी. But those are really tremendous names German universities are known for. Especially Germany is known for manufacturing, mechanical works, automobile works, aerospace works. Those are one, and management, right? And the the physics, chemistry wale programs ko lekar, and for the other programs also, right? So engineering is in the top, right? So engineering क्यों top पे है? क्योंकि इनके प्रोग्राम्स मैक्सिमम जो हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड हैं. ऑटोमोटिव हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बायोमेडिकल हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई. ये सभी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं. आई डिडंट से अबाउट कंप्यूटर साइंस, ये इंजीनियरिंग वाले थे सभी. तो वैरायटी ऑफ द स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल एंड इट्स रेनाउंड नाउ. इट्स ऑफर्ड बाय द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज. ऑल टॉप 10, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग दिस. They were not participating in this ranking system, back in the year of 2020, 2021, but they have started offering and participating in this all ranking system so that इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पता चले कि इनकी यूनिवर्सिटीज बहुत ही वैल्यूएबल है, और बहुत सारे इंग्लिश लोकेशन से, जो यूएस है, यूके है, और भी कंट्रीज हैं, वहां से बच्चे जर्मनी पढ़ने के लिए जाते हैं. एज आई सेड, मैनेजमेंट स्टडीज वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैनेजमेंट स्टडीज आर जनरली दोज प्रोग्राम जो एमबीए, एमआईएम, बीबीए और बैचलर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. सो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट रैंकिंग्स. एफटी रैंकिंग होती है फाइनेंशियल टाइम्स की. क्यूएस रैंकिंग वी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, राइट? सो ये जितने भी हैं, employability point of view से, they all are the good rank colleges, and you can see those, the colleges in these all rankings, the platforms. आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, एज आई सेड, कि ये सिर्फ इन सभी प्रोग्राम्स के लिए फेमस नहीं रहा है. जमन जो है वो बहुत ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज में है, इतनी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है जो कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को लेकर है. वो इंग्लिश स्पीकिंग भी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल भी है. तो वी कैन हेल्प यू आउट फाइंडिंग दोज प्रोग्राम्स इवन इन द आर्ट और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आप एलिजिबल ही नहीं हो. आप एलिजिबल हो इफ यू हैव अ राइट चॉइस प्रोग्राम्स फॉर यू. Relevancy is the key for it, right? And if you're saying that you want to change your the stream, right, then for that we need to be little specific with that one. But I'm not saying कि आपका हो नहीं पाएगा. We surely will find that the quick way for you so that you get the right choice colleges and you get your right time visa. uh, Computer science and IT, it's again, the well advanced technology country, right? For making these all automobile industry better. Why it is happening? Because of the reason of computer science and IT advanced technology, they have started inbuilting and like using it in the engineering departments, right? So international students gets the benefit of these cutting edge, I'll say, library and the experiments they easily can do with the support of lab team and all. Their percentage of contribution in the research is really high. So it's a well advanced country for many other aspects. Last but not the least is the medical programs, but yeah, it's getting popular now. The colleges are less, but again, colleges are the Indian accepted colleges, right? So if you do that medical degree from there with very spending a very small amount, which you pay generally the the very higher amount in the other locations, right? So those will be uh, very good for you when you're saying that you're going for medical programs and it's renowned or not. It's renowned. It's accepted by the Indian, uh, the system also, and you can come here, give the exam, and then you can practice your medicine here. I hope I'm trying to make this, the slides easy for you to guys to understand. थोड़ा सा और easy कर दूंगा. Questions answer पे जाकर ये और helpful हो जाएगा आप लोग के लिए. Do I really need not to pay the tuition fee? बता चुके हैं हम, बात हो चुकी है हमारी इस बारे में. जर्मनी एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे सब्सिडाइज है स्टेट गवर्नमेंट से.
तो हर एक स्टेट के पास अपना अथॉरिटी है, स्टेट ओन्ड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट फंडेड हैं, तो आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया वो सिर्फ एक छोटा अमाउंट होता है जो आप पे कर सकते हो। क्या बजट लेके चल सकते हैं? ट्यूशन फी के अलावा जो बजट है वो आपका लिविंग कॉस्ट के लिए लेकर है, जो कि मैंने आपको कंसिडर किया। रफली अराउंड 1,000 यूरो आप मान के चलो, इतना कॉस्ट आपका आ सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, दैट डिपेंड्स टू यू एंड यू नो हाउ you live, right? That's completely based on your living style. So housing, fooding, clothing, study material expenses, this is not fixed, this is variable point, right? So आपको कितना खर्च आता है? हेल्थ इंश्योरेंस आपका फिक्स हो सकता है, बट when you saying that you want to go out for some activities, कुछ घूमना है, कुछ करना है, तो वो आपके बजट से हो सकता है ऊपर नीचे जाएगा, बट ऑन एन एवरेज इट्स कॉस्ट अराउंड 934 that we have calculated as per the the visa requirement, right? It has to be there in your account, and for that you need to book this amount in the German bank, और आपको ये अमाउंट आपको दिखाना पड़ता है। कैन आई वर्क एज इन कैन आई वर्क इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट? यस, ऑफ कोर्स यू कैन वर्क. There's a new amendment and changes that they have come up with, right? So it's 120 full days you can work in a year. एक साल में इतना कर सकते हैं काम एज अ स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू. पार्ट टाइम आप करना चाहते हैं, पार्ट टाइम की बात की जा रही है, और यहाँ पे पार्ट टाइम 240 आप जो हाफ डे काम कर सकते हो 365 दिनों में, 120 फुल डे काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते। आपको फुल डे का मतलब ये होता है कि दिन में आप कॉन्टिन्यूस पढ़ाई छोड़ रहे हो और वो 120 दिन कॉन्टिन्यूस काम करो, ऐसा नहीं होता है। There's a state, the limitations, there's a university limitations, there's a international students limitations for it, right? So you can't say that you can just do 120 दिन का पूरा काम. So let me cut you here. So you need to understand this कि आपको इतना काम मिलेगा ऑप्शन, बट ये आप अपना दिन के हिसाब से बांट सकते हो, घंटे के हिसाब से पूरे साल को अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? Scholarships, of course, available hai. You take a screenshot of it. I have given 2 links here to check about the scholarships. Will assist you finding the scholarships. Scholarship is really competitive. Uh, if you want, you can take a snap of it, and then you can look at to the available scholarships for your child. And if you're student, then you can also find out some informations. If you face any challenges, do let us know. We'll assist you finding the right set of scholarships for you, but just don't like lay on it, because आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इफ यू डोंट गेट दिस वन, और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। I hope I have tried making this all the cumbersome work easy for you guys. I'll try to make things more easy when I talk about the requirement. तो रिक्वायरमेंट क्या है बैचलर्स डिग्री की? तो द क्वेश्चन इज, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बैचलर्स डिग्री or not? I'll say at some extent you are not eligible. At some extent, many of you will come across that will send you in the private colleges. Go for the private colleges and kind of support you will get. उसके बाद फिर आपको ना बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगी. No, we're not making any fake commitments here. If we are evaluating your profile, we'll evaluate you on a ground level. We'll tell you the right thing if it is possible or not. But yes, all students are eligible when they meet the certain requirement, right? पहला रिक्वायरमेंट यहाँ पे आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है डिजाइन किया हुआ है 12 साल के अकॉर्डिंग है, 12 years ऑफ एजुकेशन है। Formal educations are 12 plus 3 plus 2 in that way, the 12 plus 4 plus 2 kind of this the Indian education system is. तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, बट यहाँ पे जर्मनी में आपको 13 years की एजुकेशन है, 13 plus 3/4 +2 करके आपको इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। तो 13 साल की एजुकेशन है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स बैचलर्स में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे एडमिशन नहीं आएगी, फिर तो हम तो अप्लाई नहीं कर सकते। मैं तो 12th ही पास कर अभी करना है या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो मैं क्या बैचलर्स में एडमिशन ही नहीं मिलेगा मुझे? ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे वेज है यहाँ पे, बट हाँ, एज आई सेड कि टॉप प्रोग्राम्स के लिए इफ यू अप्लाइंग देन इट्स कॉम्पिटिटिव। फॉर दैट यू नीड टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। द वन इज, या तो आप, पहला ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो देखना कि या तो आप आईबी और कैम्ब्रिज बैकग्राउंड से हो। जो बच्चे या पेरेंट्स सुन रहे हैं कि उनके बच्चे भी 10th क्लास में हैं, तो उनके आप बोर्ड चेंज कर दोगे तो आपको इजी हो जाएगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो या तो आप आईबी
बोर्ड से हो या कैम्ब्रिज बोर्ड से हो, तो आपको कोई 13 ईयर्स का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके। सेकंड क्राइटेरिया इज व्हेन यू सेइंग कि आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, तो क्या करना पड़ेगा? जनरल सिनेरियो में आपको एक फाउंडेशन डिग्री लेनी पड़ती है या फिर 1 ईयर का बैचलर्स करना पड़ता है। तो फाउंडेशन ईयर के लिए ही जनरली बच्चे जाते हैं, बिकॉज क्या है कि वो बेनिफिट देता है बच्चे को, और 1 साल बर्बाद नहीं होता है इस तरीके से। और वो बहुत ही बेनिफिट है बच्चों के लिए, बिकॉज क्या है कि आपको जर्मनी में रहकर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं सीखने का। 1 साल का एडवांस नॉलेज हो जाता है जिससे आपको बेनिफिट होता है। बट कुछ बच्चे हैं जो इंडिया में आईआईटी ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि वो आईआईटी एडवांस दे देते हैं, आईआईटी जेई एडवांस। रैंकिंग कोई मैटर नहीं करता है, पास करने की जरूरत है, आप पास करते हो, आप एलिजिबल हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए बैचलर्स में जर्मनी में। ओके। And we are here to assist you for all these, right? So whichever suits to you, we are here to support you. Most of the students are not from the IIT background and the 1 year bachelor's background. If they want to get in the right college right after their 12th, then a student colleague is the wonderful option for them. But if any one of you listening जो 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, तो वो अभी फिलहाल कैम्ब्रिज बोर्ड को या आईबी बोर्ड को इंडिया में ले सकते हैं, जिससे आपका इजी हो जाएगा जर्मनी में जाना, और स्टडी कंप्लीटली फ्री है फॉर दोज कैंडिडेट्स। ओके। डेडलाइंस आर, जर्मनी में 2 इनटेक है, विंटर एंड समर। विंटर जो स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर में, एंड समर जो स्टार्ट होता है मार्च या अप्रैल में। दिस इज फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं कि अंडर ग्रेड पे अलग है, मास्टर्स पे अलग है, पीएचडी पे अलग है, नो। University runs their intake mostly too, and winter is a big intake, summer is a small intake. Deadline, you can see it's variable. It's not fixed for all level, the children's. uh, for like undergrad students, there's a different deadlines, but this is the deadline that we have captured. Most of them comes under in this, the window. For winter, it's 15 December to 31st March, maybe of 31st May for some colleges. Those are not restricted, but yes, for summer, it's start with the 15th August and end by 15th January. Okay. Why Allen Global? Why we? Uh, So you joined as a student or a parent today. You know it, like we are giving you the free session to educate you about why Germany, right? आप क्या कर सकते हो जर्मनी को लेकर, कैसे जा सकते हो जर्मनी? So the first thing is that we are here to give you the knowledge about Germany, and then we are here to support you on the admission application process, right? We understand the pain, right? We understand that how the other are making fool to our German students, right? German as aspiring students. तो जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है। फैकल्टीज कैन हेल्प यू विद द A1 A2 B1 levels, and they'll help you cracking this in the very limited timeline, right? सो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो टेस्ट है इसकी प्रिपरेशन आपको कोई प्रिपरेशन नहीं कराएगा मार्केट में, जो भी है आपको नॉलेज सिर्फ देंगे, इंटरनेशनल डेटा आपको मिल जाएगा कहीं से, बट आपको हेल्प नहीं मिलेगा। टेस्ट टेस्ट इज काइंड ऑफ द सैट फॉर यूएस। सैट आप जो यूएस में देते हैं उस तरह से टेस्ट है, इसकी प्रिपरेशन आपको एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट में आपने जर्मन का सीखा है, आईएल्ट्स का भी प्रिपरेशन विल हेल्प यू आउट, राइट? स्टूडेंट कॉलिग का एक एग्जाम होता है जो आपने देखा था एक पेज पे, मैंने आपको दिखा देता हूँ फिर से, कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कॉलिग है ये, ठीक है? स्टूडेंट कॉलिग इज द एंट्रेंस फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट और सीबीएसई बैकग्राउंड एंड दे वांट टू गो इन द बैचलर्स में जाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो उनके लिए भी एक एग्जाम है जो यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। 1 साल के बाद इस एग्जाम को क्रैक करना होता है, इसको एफएसपी बोलते हैं। एग्जाम के बाद आपको एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तो वी आर हेयर टू हेल्प यू विद दीज ऑल थिंग्स राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। प्रोफाइलिंग है, स्ट्रीम सिलेक्शन है कि आपको कौन सा प्रोफाइल से क्या स्ट्रीम लेना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू सेलेक्टिंग जर्मनी एज अ डेस्टिनेशन फॉर योर child and for you yourself, right? So it's a really important point I'm telling you. यूनिवर्सिटी का फिट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी सिलेक्शन में, वीजा में, और आपको शायद वीजा नहीं लगेगा यदि आपने एक अच्छा सिलेक्शन नहीं किया है कॉलेज का।
application and documentation is really important for it. It's a tedious for international student, not as easy as for other locations, right? It's tedious. एक तो लैंग्वेज की थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है एप्लीकेशन स्टेज पे. वी आर हियर अगेन टू असिस्ट यू फॉर दैट. इंटरव्यूज होते हैं at any stages, be at the the application stage or at the visa stage or at any point of time. If any changes that comes, we are here to support you for the mocks, कि आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा. इंटरव्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड, विल हेल्प यू विद द मॉक्स ऑल्सो. So holistic student visa support, it's start from just not to help you with the German training. सिखाने के बाद से आपको स्टूडेंट वीजा सपोर्ट है जिसमें एक एक टीडियस प्रोसेस है पूरा डॉक्यूमेंटेशन का, फाइलिंग का, इंटरव्यू का एंड देन सबमिशन. These all things comes into the student visa. Last but not the least, it's accommodation and alumni support. We are here to support you for finding the accommodation for you, and helping you with the alumni, connecting with the students who are currently studying in those colleges and universities. So we'll try finding that support for you, and we'll be helping you giving this really, a benchmark service which can help you getting a really, the flawless services from Allen Global. We'll help you with the other things. We can't accumulate here in one go. So if you come up, like with your one-to-one questions, we are here to support you out and to help you with, like those queries. Thank you so much. I can over to my colleague if any questions are there. The session was insightful indeed, sir. Let's look at some queries. The first Sure. query is regarding MBBS in Germany. What are the prospects of MBBS in Germany? Yeah, as I said, it's a populist program now, and most of the colleges have started offering the medical program in Germany, and those are Indian valid programs, I'll say. And if students are coming after doing MBBS from Germany, which is of 6 years, and if they come up, come back to India, they have to just to appear for an exam, and then they can start their practice here in India. Now coming to the programs, yes, medical programs are available, and we are here to support you for that one also. The process is little lengthy, so I can't give you the idea on this webinar. But if you come up like with your doubts for the one-to-one session, I'm here to support you, and I'm here to help you with the the process. Thank you so much, sir. Another query is, if my child has a European citizenship, what benefits will he get in scholarships? I can't commit you for the scholarships, but yeah, we need to check that, the couple of websites. Of course, your chances will be high, but again, as I said, it's an academic country, right? It's a, evaluation based on those things. But yes, you will surely get priority among, the local versus EU versus, the international students. So that is how it's get prioritized, right? So if you are a EU citizen, then your chances of getting a scholarships and admission will be bit easier. All right. Moving forward, what is that English dot program? English taught program. English taught programs are available, and English taughts are जो जिसकी भाषा इंग्लिश होती है, जिसकी आप जो समझ सकते हो, जिसकी पढ़ाई इंग्लिश में होती है. जैसे हमारे यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश में होती है. आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो कि आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए. तो इंग्लिश टॉट का मतलब है कि इंग्लिश में पढ़ाई होती है वो सब्जेक्ट्स. जैसे आप जाते हो कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपको जर्मन टॉट है और इंग्लिश टॉट है. तो उस हिसाब से आपको जर्मन टॉट में जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी, जिसके लिए आपको जर्मन सीखना है और इंडिया में ही एग्जाम या फिर वहां पे जाकर एग्जाम देना होगा. एनरोलमेंट के लिए इंग्लिश टॉट का मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम देके आपको एडमिशन मिल जाएगी. All right. So Neve asks, will it be allowed to practice in India after getting a degree in German from Germany? Is it for medicine? Yeah, medicine, specifically medicine. Of course, yes. You can practice medicine here in India. All right.
What is the ratio of students enrolled and students who got a seat? This is very specific question, but it's a university specific, right? So I can't give you any random idea on this. I don't have the right database as of now. If any of those who has asked this question, please ping to us directly. We'll help you with those sets of database as well. All right. Are there no tuition fees in any state, or only few states offer free education? No, all 16 states offer the free education. It's not about states, it's about, the state funded colleges, right? And their programs, right? So most of them are state funded, right? So those all are tuition free. And certain programs are, with the tuition cost, but those are, funded by the colleges, funded by the university, funded by the government. But again, उन प्रोग्राम्स की जो क्या है ना कि मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको देने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपने गया एमबीए प्रोग्राम के लिए, तो एमबीए आपको जो है प्रोग्राम पब्लिक कॉलेजेस में नहीं ऑफर्ड हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, तो उनके कुछ ना कुछ सेमेस्टर कॉस्ट ज़्यादा हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो वो कुछ सर्टेन चार्ज जो है वो ज़्यादा लगता है। तो बट दोज आर नॉट कमिंग अंडर द स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स, those are specific programs for any universities. All right. So, a lot of students are asking, do we get any scholarships on the basis of JEE or NEET? I'll not say your chances are high in admission first. If you, cracked your JE advance, your admission chances are first is high. The second is you'll get you the choice of your college, right? And when it comes to the tuition cost, it's completely free, right? So it's a free means कि 500-600 यूरो है, जो कि आपको बहुत ही कम है, जो कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कॉस्ट के हिसाब से आपको नहीं कुछ पड़ने वाला। हाँ, इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया, स्टेट किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे भी स्टेट आपको ऑफर करती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा स्कॉलरशिप्स जो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। और जेई वाले बच्चों को एडिशनल एडवांटेज है एडमिशन का, दूसरा है कि आपको एडमिशन हो गया तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के, लोन भी मिलती है बहुत ही कम दाम पे, और बहुत सारा सपोर्ट है जो आपको लोकल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर आप जो जैसे मैंने दो साइट्स बताई हैं वहां पे भी आपको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। All right. Thank you so much, sir. As we wrap up this awesome webinar, a big shout out to all of you amazing participants who stuck with us throughout. We really hope we satisfied your curiosity and answered all those burning questions. If you're curious about where you stand among all the other applicants out there, just get in touch with us through our phone number. You'll get a personalized report highlighting what you're great at and where you could amplify it up. Alrighty then, catch you at the next one. Have a super weekend ahead. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।